Students, I am your Saroj sir. I welcome you to my class in physics. Today we will read about a topic which is magnetic field at a point on the axis of a coil conducting current. This is my MEC. MEC means magnetic effect of current, and this is class number 3. What I did in class number 2, I found out the same magnetic field at a point not on the axis but at the center of a circular coil. There is a circular coil like this, and at the center of the coil we found out magnetic field. But today it is not at the center but at any point on the axis of a coil conducting current. Prior to that, in class number 1, we had read about Biot-Savart's law. It is a very helpful, important, significant and meaningful law in studying magnetic effect of electric current. This is a sketch of the concept of Biot-Savart's law. Mn was a conductor. Mn was the conductor and it was carrying current. What current it was carrying? It was carrying current which was I. I was the current which was being carried which was flowing in the coil, and due to a current carrying conductor at any point near the conductor, here, there is a magnetic field. We have chosen P as a point where the magnetic field is found out. To find out that, we first took a small current element xy whose length was dl, and due to dl, what is the magnetic field at P? We have discussed all these things. That is equal to dP, and dV equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. But B, which is known as magnetic induction flux density or magnetic field intensity, is a vector quantity. So in vector form, it is equal to mu 0 I by 4 pi I dl sin theta, that is dl cross into r cross. So it is very clear that the vector direction of dV is always perpendicular to dl vector and r vector. This is very essential, and one has to stick to this thing, then only one can understand this thing. To find out magnetic field at the center of a coil, it was easier. But to find out the magnetic field at a point, this point we have taken as P, this point we have taken as P. It is on the axis. O, but this is center. So this is the axis and current is flowing here. Then it is very tricky. I don't say that it is difficult, but definitely it is very tricky because it involves three-dimensional concept. But the limitation is that the board is two-dimensional, and on a two-dimensional board you cannot show all the three vectors, which is the basic vectors in a three-dimensional space. So you say, you know this thing, this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. Now I rub it. If you only handle x and y axis, so that is in xy plane, this is no doubt, this is a two-dimensional plane. But if it is necessary to find out the third axis, which is mutually perpendicular to these two things, then you have to do the third axis like this. You see, this is 90 degree, it is okay. You can very well see it. X-axis, Z-axis, they are also perpendicular to each other. Does it look that there is 90 degree here? It looks like 120 degree. But all along you have accepted that, though it does not look like a 90 degree angle, but it is 90 degree in the real case. Similarly, you see, I have brought this example for you. There are three axes. This is one axis, this is another axis, and this is another axis. I keep it like this. Let me say this is your x-axis. Let me say this is your like this. Or you can say this is your x-axis. This is your y-axis. No problem. This is a two-dimensional space having two mutually perpendicular axes, x and y. But what is z? Z is here.
How can you show z axis here? You cannot, because you have to show a vector which is perpendicular to x and y. Yes, you can say this is x. देखो भलो कि देखो, this is y and this is your z. You can say it because we have taken out this thing in space, but in board you can only show x and y. z पे हमको कौन करियो पड़िबो? Either हम एमती देखियो पड़िबो किंबा हमको यार को देखियो पड़िबो. Okay, z never looks perpendicular to x and y, but actually its fact is that thing. So we show by convention x, y and this as z. So even though z cannot be drawn on a two-dimensional board, we have to accept that z is perpendicular to x and perpendicular to y. So the space में तो मतलब अंकन करेंगे like this. I repeat for the last time. This is x, this is y, and obviously this has to be your z. But you can never draw this figure. You can never draw this figure in a two-dimensional board by showing this as 90 degree, this as 90 degree, this as 90 degree. You have to keep this thing in mind. Okay? I think you are clear. This is clear and you should keep it in mind. Pilamane, what we have done so far, I have told you about the basic concept of a 3D space and what is the difficulty in showing a 3D system of access in a 2D board. तेणु तुम 2D बोर्ड रे तुम केबे 3D एक्सेस जोटा कि परस्पर प्रति 90 डिग्री तुम केबे करि परिबो नाही. ठीक अछि. Let us now come to the concept of magnetic field at a point on the axis of a coil. This is my coil. एरा घरे तयारी कराई छी. सेमति ओटा किछि ओटा हाई फाई कॉइल एटा नुह. तेणु आमे घरे मिलुथबो अनेक जिंस को व्यवहार करी जोटी हमर डिफिकल्टी अरेज करे ताको आमे कोन करि परिबा आमे ताको बुझि परिबा फलो करे. सेमति हम घरे गोटे इलेक्ट्रिक तारा पड़िथिला. ओके, मु से इलेक्ट्रिक तारा को मोड़ी देके ताको ओटा कॉइल कर देली. ओके, आई अज्यूम दैट एठी केतटा टर्न अछि, मात्र गोटिए टर्न अछि. सो दिस इज ए कॉइल. ओके, देन ता सेंटर ता एठी अछि एंड यू सी हियर इज द axis. देखछो ना नहीं. So this is the axis of the coil, and on the axis we can take a point here or here wherever you want to do. And हमको काढे पड़िबो ए करेंटा जोगु ए पॉइंट रे केते मैग्नेटिक फील्ड सृष्टि होछि. आउ थरे देखो एटा ला कॉइल, एटा तर एक्सिस सेंटर दे जाई छी. तो जे कोन से पॉइंट एक्सिस पे नै कि तमे कोन काढी परिबो तमे मैग्नेटिक फील्ड काढी परिबो. नो डाउट अबाउट इट. तापरे मु ए कॉइल टू एठी रखी. तापर आ गोटे कथा हला देखो ए कॉइल टा को मुझे चित्र करी. आई कैन डू इट लाइक दिस. देन यू सी दिस द फ्लैट, दिस द प्लेन ऑफ द कॉइल. ओके, मुझे यदि एमिति रखिबी देखो तमे कोन प्लेन टा देखि परछो, देखि परनो. ता बदले मु कोन करछि ना मु एठी आ गोटे घरे हमर डिनर प्लेट को आछि. दिस इज द कॉइल. व्हाट यू सी द प्लेन ऑफ द कॉइल. ए प्लेन टा कोन हे परिबो ना वर्टिकली रही. देखो वर्टिकली रही छी. द प्लेन इज वर्टिकल. इफ आई कीप इट लाइक दिस, द कॉइल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल. दिस इज वन व्यू. बट सपोज मु जदि एटा को एमितिया रखिबी तमे कोनटा देखुछो, यू लो कोनटा देखुछो, तमे केवल तार सर्कमफरेंस रो अर्धवृत्तटा ही केवल देखुछो ना नहीं. तमे एटा प्लेन देखो ना. What you are saying? You are saying only a curve of the coil. So there is a difference in visualizing the plane of the coil when you see the coil in this position or in this position. Okay, this is side view. This is a side view. Okay, then you see current. Current can flow either in clockwise direction. Eta co direction. Barta, gotai, dita, tinta, clockwise direction, or it can flow in anti-clockwise direction. The choice is ours. It can flow in clockwise direction, or you can see it in anti-clockwise direction. You can look at the coil in this manner, or you can look at the coil in this manner. When you look like this, pi r square, the radius and the area of the coil is now visible. But when you see like this, area is not visible. I think it is very clear. I think you understand this. आमे कौन करिबा ना ए रकम भाबरे कॉइल को देखिबा. We'll imagine that the coil is in a
vertical plane. The coil is in a vertical plane. So this figure which I have taken is a coil in the vertical plane. You can say तुमको जो material दिया जाइए से material रे एमितिया चित्र करा जाइए. This is a vertical plane and this is your coil. This figure will give you a fair idea about a vertical plane in which a coil is present there. I think there is no doubt about it. So this is a vertical plane and a coil रे what type of current you have taken? You have taken anticlockwise current. Let us consider a coil in vertical position or vertical plane. Let us consider a coil in which plane? It is in your vertical plane, right? Then I is anti-clockwise current in it. It is very clear. Then C taken. Now C is the center of the coil. C is center of the coil. Okay. Then A. What is this thing? This is the coil. It is the radius. A is equal to radius of the coil. Then P is a point on the axis of the coil. जो coil is एटा तर हला axis ए axis उपरे P नाम रो गोटे बिंदु निया जाइछि राइट तापर कोन आसिला जे x टा कोन एटाला सेंटर एटाला बिंदु तले ए बिंदुर सेंटर पाखर दूरत्व x is equal to distance of point P from the center of the coil. Coil ର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ P ଟା ହେଉଛି ଦୂରତ୍ୱ. Now let us choose a small element dl. ତାକୁ ଆମେ ନାଁ କ'ଣ ନେଇ ପାରିବା ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାନେ EF E ଆଉ F. ଏଟା EF ନିଆ ଯାଇ ପାରିବ PQ ନିଆ ଯାଇ ପାରିବ XY ନିଆ ଯାଇ ପାରିବ. Anything can be taken. Let us choose a current element EF. You can name it anything. तो मैथ्स जहाँ ना देखियो तब से आई ना EF of a small एक छोटी हवा दरकार है of element EF on the coil. କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ R ପାଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କାଢିବା ଯାକୁ DB ବୋଲି କହିବା ତାପରେ ଏମିତି coil ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କାଢିକି नेट फील्ड को बाहर करने पे हमें किसी ओके लेट अस करंट एलिमेंट हियर let dl is equal to length of the element. Okay, so that is equal to length of the element. अब गोटे कथा रहला s टा कौन s is the distance of the point P from the center of the element. এই এলিমেন্টের মধ্যবিন্দু
ए मध्य बिंदु रो P पर्यंत दूरत्व आम केते नेलु आम S वैल्यू नेछु बर्तमान आम टिके बाइट सेवर्ट्स लॉ रो ए मैथमेटिकल फॉर्मूला ऊपर टिके चिंता करबा एठी देखो I dl क्रॉस r तळे rq होची एठी गोटे एंगल अछि थीटा ओके तो हम काढिया पड़े एठी मध्ये थीटाटा केते हमें थीटा जानला परे सिना हमें ई फॉर्मूला अनुसार ताको यूज करि परिबा एथरे अधिकांश कंफ्यूजन सब बड़े 100 पिला हजार हजार पिला कर कंफ्यूजन होची ए एंगल थीटा विषय कारण बाइट सेवर्ट्स लॉ टा जो बेसिक कांसेप्ट टा पिरामिडा पढ़ी थांती परीक्षा रे लेखिकी मध्ये फुल मार्क पाई जांती बट द आइडिया इज नेवर क्लियर व्हाट इज दिस थीटा इट इज वेरी क्लियर थीटा इज द एंगल बिटवीन dl इट देखो टेंजेंट टणा है जो करंट एलिमेंट इट होची r वेक्टर dl वेक्टर कोण हला थीटा एठी देखो r टा होची कोन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट नाउ फ्रॉम हियर व्हाट इज r इट मोटे r नाही मोटे थी हमर जो नहीं जो हमें सिंबल्स नहीं जो एठी r मोटे नाही ओके p अछि एलिमेंट अछि ए जो डिस्टेंस आको में कोन कहि परिबा आको में एठी जन कहू r वेक्टर से आको में कोन कहि परिबा वी कैन से दैट दिस इज आवर s वेक्टर दिस आर s वेक्टर तले एठी कोन केला r वेक्टर अबो वेक्टर dl वेक्टर एठी कोन 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 होना r वेक्टर dl वेक्टर कोन ना यू सी एठी कोन हेची ना तमरे एटा होची करेक्ट मो एमती देखो जे एमती देखोनी एटा तमरा हला गोटे एलिमेंट रा लेंथ केते dl देखो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देखो करंट होची एंटी क्लॉकवाइज तुमको लक्ष्य करी मो कैमरा फोकस करी छी जदि एमिति करथांती करंट हेता देखो क्लॉकवाइज फिर करंट केमती जाउची एम जाउची सो नाउ जदि एटा क्लास हेतांता मु तो पछर थांती एमती हेले पिला माने करंट कोन तमे कहथांता क्लॉकवाइज मु कहथांता एमिति हेले करंट ता कोन एंटी क्लॉकवाइज आबर देखो इट इज लाइक दिस सो डेफिनेटली इट इज एंटी क्लॉकवाइज यदि करंट प्रत्येक जगह रे करंट रा डायरेक्शन होचे टेंजेंशियल तो एई जगह देखो करंट एति आसिला एई जगह आसला परे एई बिंदु रे एई एलिमेंट रो मध्य बिंदु रे ता डायरेक्शन कोड हेबो टेंजेंशियल टेंजेंशियल हो सेठी देखो एटा एंती अछि एई जगह रे ता मध्य बिंदु रे ता डायरेक्शन ता कोड अछि ना टेंजेंशियल अछि एवं करंट रो डायरेक्शन जुआडे करंट एलिमेंट रो डायरेक्शन मध्ये से आडे केवल एई जो लाइन टी मु टाणी छी आकु मु कोन कहि परिबी करंट एलिमेंट वेक्टर और आइडियल वेक्टर यार जोटा टाणी छी एटा r बदल रे एटी अछि s तल वर्तमान मोर कहबा कथा जे ए जो dl वेक्टर आ s वेक्टर कोण केते मु पछेरबी ए कोणटा देखा चित्र अनुसार देखिबा तो थीटा बले देखा छै हम थीटा बले हम लिखि छु ओके बट द पॉइंट इज whether it is less than 90 degree, greater than 90 degree or equal to 90 degree. एटा क्लास में पढ़े थिले आउरी भलो हेता था लाइवली हेता था तमे संगे संगे कहि दो सर इट इज नॉट 90 डिग्री आउ जा हो कि न हो इट कैन नॉट बी 90 डिग्री बट नो दैट इज नॉट करेक्ट काहे ना तमे जो थीटा टा को मन रखो प्रत्येक पिला मन रखो थीटा इज द एंगल बिटवीन s एंड a का बिटवीन कोन है थीटा टा एकड़ अछि रेडियस ऑफ द सर्कल एकड़ अछि डिस्टेंस s ता बिटवीन कोनटा केते अछि ना थीटा अछि बट इट थीटा अछि ना नहीं ओके बट I am not asking you that question. I am asking you what is the angle between the distance एठी मोर जे coil case रे देखो एटा को दिया जाई छी it is taken as equal to s vector तो तमे आगुर पड़ितला r vector लेखाई छी s vector s vector और dl vector रे कोन केते ता माने एटा एवं एटा रे कोन केते and that should be 90 degree मु लिखु छी in the figure angle between s vector and
dl vector is 90 degree. तुम संगे संगे से जो बस पाठ पढ़ुच तुम चमकी पड़ो 90 तो मैं देखा जाऊनी तो मुझे लिखिदेली अतएव थीटा is actually 90 degree in our figure. Okay, I again repeat, theta is the angle between dl vector and which vector? R vector. जो चित्र रे हमें नेचु s vector बोले हमें नेचु. Okay, ये भी खेला देखो एठी किछि परे मते तुमको किछोटा देखिया पड़ियो न देखेले हबो नाही. Okay, now you see this is the coil in a tangent. Okay, ମୁଁ आउथरे कहि देले never take theta as the angle between a and s. It is not true. It is the angle between dl and s. ମୁଁ कोन कहली ना मोर गोटे स्टूडेंट मोर छात्रटी अछि मोर अति प्रिय छात्र तमरी भलिया से किछ दिन तळे पाठ पढुतला. नाउ शी इज ए मैच्योर्ड young friend of mine. ताके मो डाकिबे से मते टिके हेल्प करिवो. ओके, ता नाउ छै सुब्रत. सुब्रत प्लीज कम हियर. एकड़े आस. He is having a recording studio. His name is Subrat. He was in charge of Ravenshaw Radio 3 to 4 years back. Now he is having his own recording studio. He is Mr. Subrat. तमे टिके धर एमती एटा हला the coil एटा कौन हला ना तार ये tangent एवं एटा हला कौन एटा हला ए डिस्टेंस एटा को डिस्टेंस एटा होची p बोले के लक्ष्य करो एटा होची s हला. तापर मु सुब्रत को कहले तमे से कॉइल टे काढी नियो. तापर तमे लक्ष्य करो कलाटा होची dl वेक्टर. कलाटा को वेक्टर dl वेक्टर. ए लालटा होची को वेक्टर s वेक्टर. तमे कोण केते को मुझे यदि क्लास से पढ़ु थांते तमे समते मिसी कहितांता सर 90 डिग्री. नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट. तमे घरे मध्य एकटा चिंता करि पर आउ तेरे सुब्रत आसो ठीक मो पाखो. ओके, जेमती कॉइल टे धरतले सेमती रखो. सो दिस इज द कॉइल. एमती यदि सीधा करी this is the coil. This is the black one is the tangent जोटा को मु dl वेक्टर बोली कहू छी. this is dl. so this dl वेक्टर पॉइंट मोर एठी अछि. लक्ष्य करो आउ कि हमें पछू जीवा. पॉइंट हमर एठी अछि. एटा जे तर एक्सिस पॉइंट अछि. एई पॉइंट p को मु जॉइन करली का संगे dl संगे जॉइन करली. तमे काढी दिया सुब्रत सेटा को. नाउ यू सी यू लुक ब्लैक और रेड पेन भितर कोण केते द एंगल इज 90 डिग्री. अर्थात dl वेक्टर और s वेक्टर भितर कोण होला 90 डिग्री. तो तुम एमिति भाव चित्र देखिले तुम एटा जानि परिबोनी. सो आई थिंक यू विल एक्सेप्ट थीटा इज 90 डिग्री कोठी इन द फिगर. राइट. सो थीटा इज द एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री इन द फिगर. पिला माने तुमको आजिर पाठर सब मोस्ट ट्रिकी कंडीशन को मु तुमको डेमोन्स्ट्रेट कर देखई देली. ओके, मु तापे आ गोटे मो स्टूडेंट रो साहाय्य लेथिली. तुम देखिलो जे एठी जो थीटा लिखाई जे थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट s वेक्टर एंड dl वेक्टर. एठी जे थिला थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर. एठी r बदलला ने कोन देइछु हम एटा s नेइछु. तो एटा को मु r को लिखै देकी एटा मु s कर देली. एंगल है थीटा इसको देखै देले थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. से अनुसार फॉर्मूला कोन चेंज हे जिवो जोटी जोटी r थिला सेठी मु s लिखिबे. तळे एटा कोन हे जिवो s क्यूब हे जिवो एवं एठी कोन हे जिवो एटा s स्क्वायर हे जिवो. केवडे एठी कहछि ये जोटा हम डायल जोटा हम बैक समझ कर हम r नेतलो एठी फिगर रे हम तको s बेली हम नेलो. ओके, तो हम फॉर्मूला लिखली. कोन लिखली if dv vector or dv equal to elementary magnetic field at P due to current
element ideal vector current element ideal vector लिखि परिबो किबा तमे लिखि परिबो current element EF नामक जो हम एलिमेंट नेचु सेटा करंट एलिमेंट वेक्टर है तार लेंथ होची dl बेले हम कहि सरछु ता जगो फील्ड हला dp एक्चुअली तमे हठात के होल कॉइल पई की तो फील्ड काढी परिबो नाही तो तमे चिंता करियो पड़िबो जे कोन काढिबो जे होल कॉइल ता एमती छोटे छोटे अंश रे विभक्त हेछि ना नहीं तार गोटी अंश हला ef एठी हम से करते गोटी अंश हला ef तार दर्घ्य हला dl करंट जाउची I तेरो ए dv रा मूल्य कोन हो द मैग्नीट्यूड ऑफ dv कोन म कहली द स्केलर वैल्यू ऑफ dv अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला dv इक्वल टू देखो केते लिखाई छी जे μ0 अनेक μ0 कहती μ0 by 4 pi into I dl sin theta by s square. Don't get confused. In the formula for study of Biot-Savart's law, we have taken this as r. So, by r, but एठी हम लेछु s. एठी हम कोन लेछु s लेछु तो formula आगला एठी. एवं एठी पुनी कोन लेट अस सब्स्टिट्यूट थीटा टा केते थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. But theta is equal to 90 degree. Theta is equal to kete thi? Theta is equal to 90 degree. Okay. Then sei sutra anusare in vector form dv vector is equal to μ0 I by 4 pi into dl vector cross s vector divided by s cube. এই সূত্র অনুসারে μ0 I by 4 pi dl vector into s vector by s cube. dl vector into cross into s vector by s cube. बुझ पहले तमे हैला कि नहीं मुझे देखो एई फॉर्मूला यूज करबी ताले मोर मैग्नीट्यूड केते हिजो इन मैग्नीट्यूड dv is equal to μ0 I by 4 pi it is theta over 90 degree is I dl by s square. इन देखो मु थीटा जदि 90 सब्स्टिट्यूट करबी μ0 I by 4 pi into dl sin theta 1 हेगला sin 90 is 1 a square is a square. So μ0 I by 4 pi dl by s square and where goes sin theta sin 90 and that is equal to 1. This is in vector form and this is in which form? This is in scalar form. Then the question is a jo it is rahila dv and what should the direction? The direction dv is obviously perpendicular to what and what? dl vector and s vector. एठी हम dl vector स्टेट हेलानी तो हमें गोटे प्लेन कथा चिंता करबा जो प्लेन रे कोन हेछि ना dl vector भी अछि आ को वेक्टर अछि हमर s vector मध्ये अछि तो ता प्रति dv टा परपेंडिकुलर हबो तो सेही पे देखो रेड रे शो करा हेछि at p here is a vector which is perpendicular to s vector अछि ना देखो एटा लायस एटा लाय dv. Okay, so d vector is given by it is p nature I mean China का q भी नहीं करेगा pq vector. Okay, pq vector का हमें कुछ dv vector so it is shown by pq. तो जब मो डायरेक्शन कथा चिंता करबी एटा को लिखै दिए direction of elementary magnetic field
is along PQ vector which is the direction of dB vector. It has to be perpendicular to what? S vector. It is perpendicular to dl vector and s vector. जदि dl vector सहित तुम जदि किसी confusion मन रहउची ताले तुम खाली कहि परिबो it is perpendicular to which vector? It is perpendicular to s vector. Up to this I think it is very clear. So dB is like that, right? It is follow देखो dB is along PQ एवं this is your s प्रति लंब होला केते PQ तो PQ होला dB रो direction. पिलाने आमे ए स्टेज पर आसिलो. What is dB? dB is the small elementary magnetic field which is produced at P not due to the entire coil but only due to a current element or a part of the current element, a part of the coil which you have taken as EF. Okay. Now its value is mu0 I by 4 pi dl according to your note. This is your equation 2. Okay. Prior to this, we had written this, which was your equation 1. What was this thing? This was your equation 1. 1 and 2, which are given in the note, you can follow it. Now the question is, let me here introduce how got angle jab kame kaiba phi. What is phi? Phi is the angle between S and X. देखो जना नहीं. Let us introduce phi as the angle between S and X. I repeat here. This angle is between positive direction of S and positive direction of X. What is S? That I have repeated so many times. S is the distance of P from the element, current element. What is X? X is the distance of the same point P from the center of the coil. Okay. So this is your phi. Very clear? Then the question is this vector dB vector. Let us resolve dB vector into two mutually perpendicular component along CP, which we have taken as x-axis बेले हमें कौन चे C रू P तक हमें कौन कौन चे x बेले कौन चे and perpendicular direction and component on CP and इटी में ना दबा आपको हमें कोई बार P Y आपको हमें कोई बार P Y dash इटी को हमें कोई बार x so CPX आपको कोई बार that along CPX, which we take as your x-axis, and the other one is Y dash, and Y dash taken as y-axis. That is taken as x-axis. Taken as x-axis and this is taken as y-axis. Whatever here, whatever here. Phi को हमें introduce कर सकते हो. Phi is your this angle. Now you say this is perpendicular.
এটা কোন এটা perpendicular y dash is perpendicular to CPX. I think it is very clear. Now this angle plus this angle is कितने पर 90 degree है ना कि नहीं? And this is perpendicular to this, so this angle plus this angle is also equal to 90 degree. देखो सब तो लिखले बहुत अधिक आ जीवो. This plus this is 90 degree, this plus this is equal to 90 degree. This part is common. बाकी रहेला कौन? इधर इधर रहेला phi, obviously इधर रहेला phi. So this angle must be equal to this angle. Okay. From the figure, angle YPQ is equal to phi. कोई दे तुमको don't lose this explanation. एक figure अनुसार है, this green line is perpendicular to this blue line. So this plus this कितने है? The tick mark and the dot they add up to make it 90 degree. Again this red line is perpendicular to blue line. So the dot and this line, this angle tick mark is also 90 degree. जो इधर का मैं काटी दबा इधर को तो रोइला कौन? ये एंगल का से एंगल से समान. I think you understand it. तो मुझे लिखिए YPQ is equal to phi. सही गला? बर्तन कौन करेंगे रोइला बर्तन. तापर हमें कौन करेंगे ठीक ये एलिमेंट रो तब ऑपोजिट डायरेक्शन रे हमें आउ गोटे एलिमेंट नबा जाको हमें कहिबा जाको हमें कौन कहिबा तो नोट रे लिखाई छे हमें तो कौन कहिबा जे मु ताको E dash एवं F dash नउछ तो नोट रे जातिबो तो सिया लिखिबो J K बदे तुम नोट रे अछि सो दिस इज इक्वल टू E dash F dash. ओके हमें क्लियर बर्तन हमें लिखिबा एठी let us choose an identical means same length, identical current element E dash F dash. I make it very clear. In the note, probably this is JK, whatever it may be, it has given on the diametrically opposite side of the vertically placed coil. जो कॉइलटा वर्टिकली रही छी ठीक तार ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड रे आ गोटे एलिमेंट ले E dash F dash लेंथ करते सही dl, that is the length which is equal to EF. तो तार जब मतलब फील्ड हम there will be an elementary field dV dash at P due to this element E dash F dash. Now you see it is S और आ भीतर कोण थला कहते phi, तो इथे भी कोण कहते हम phi will be equal to this thing. Okay, so that will equal to E dash F dash. Okay, in the figure BB was shown as perpendicular to S. Now you come to the reverse side. DB dash which is equal to DV for all practical purpose. Okay, is perpendicular to this S. ऊपर S पाएंगे यार वाला perpendicular, तोड़े S पाएंगे यार ये वाला perpendicular. Okay,
and this angle is phi. This angle is also phi. I am going to dv dash na likhiba, but in magnitude that will be equal to dv. In the figure, angle CP midpoint C dash is equal to phi. एगुटा एते परीक्षा लिखिबरी मन रखि थाओ ए एंगल रे जदी phi हला from symmetry this angle is also phi. तो मैं ये लिख परिबो for from symmetry phi is equal to angle between CP and element E dash F dash. ऊपर जहाँ तोड़ा हला सीधा. ओके. dv dash का कौन is perpendicular to S. देखो. इटा होची S. dv dash is equal to perpendicular to S. Right? है गला. Now हमें इटा को कौन करिबा ना रिजॉल्व करिबा. ओके. Let us now resolve. It is problem S and dv dash is equal to dv in magnitude. खाली problem है dv रो magnitude जा ऊपर है तो dv dash का magnitude मध्ये होची सेगा है. Okay. Let us now resolve dv dash equal to dv. Let us now resolve dv dash equal to dv along two mutually perpendicular directions, which are along x and y axis. Now I am rubbing it. देखो ये एंगल जाउची फाई इटा जे db तले यार कंपोनेंट केते हबो db cos phi एटा होची db डैश इक्वल db यार कंपोनेंट केते हबो db cos phi मु लिखिबी db cos phi equal to component of db along py and py dash directions, which are opposite. हैला यदि अपवर्ड याड को जदी रिजल्व करिवो db cos phi याड गले db cos phi मु लिखि देली कंपोनेंट्स ऑफ db along py and py direction एवं db sin phi याडू जेतला cos phi तले याडू केते हबो आइटा हबो db sin phi r मध्ये केते हबो db sin phi. So db sin phi equal to two components along x axis, two components along x axis. It will देखो ऊपर db cos phi तळ db cos phi they are equal in magnitude but opposite in direction. तले कोन सेटा हबो सेटा कैंसिल कर दिबो db cos phi components
are along opposite directions, so they cancel out. ତେଣୁ ଉପର dv cos phi ତଳ dv cos phi ये कौन है कैंसिल करेगा एक सेकंड केटा कम ना दीटा रहेगा बट टू dv sin phi components add up to produce लिखे बनी to generate a net elementary field dv sin phi निश्चय कहते हैं जो to dv sin phi along which direction along x axis. I have discussed this particular case quite elaborately. Lot of ideas had to be given to you about the vector directions and the angles. Okay, so let us say that this is part 1 of our discussion. Part 1 of our discussion of this particular theory, magnetic field at a point on the axis of a coil conducting current. This is part 1, we'll assume it. Now, the rest of the part, we'll do it in part 2 on the same topic.